Hello, everyone. A very good evening. I am Dr. Himani. I'm a developmental behavioral pediatrician, a co founder, and a director at Continua Kids. And today we have come up live with a very important topic for discussion, and that is what is the psychological impact of autism diagnosis in children, in parents of children who get a diagnosis of autism, and how we as parents or how we as professionals can help parents to cope up with these challenges. So, first, we need to understand and we need to look into the research and find out what are the kind of psychological impact or stressors that the parents of children with autism spectrum experience. So, it's very important here for us to understand that raising a child with autism spectrum can be a very overwhelming experience for parents as well as for the whole family. अब एक बच्चा को जब ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलता है तो उसके केयर में पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है, नॉट जस्ट देयर मदर इमीडिएट पेरेंट्स बट ऑल्सो द ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व. द डेफिसिट्स जो भी हमें डेफिसिट्स मिलते हैं, दे आर ऑफन प्रेजेंट इन चिल्ड्रन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. देयर इज अ प्लेथोर ऑफ डेफिसिट्स एंड चैलेंजेस. बहुत सारे गैप्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड केयर गिवर्स के लिए वो चैलेंजेस कम अक्रॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनइफेक्टिव पेरेंटिंग. वो जो challenges होते हैं वो कभी कभी लीड करते हैं इनटू इनइफेक्टिव पेरेंटिंग. समटाइम्स इट लीड्स टू इंक्रीज पेरेंटिंग स्ट्रेस. पेरेंट्स बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं व्हेन दे हैव टू डील विद दिस. There is an increased mental and physical health problems which are observed in parents of children on autism spectrum. These problems are more than those observed in parents of typically developing children or in parents of children with other developmental difficulties. सो जो पेरेंट्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों के साथ जिनको डायग्नोसिस मिलता है, जिन बच्चों को, उनके पेरेंट्स के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई गई हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च मुताबिक कि जो बच्चे टिपिकली डेवलपिंग हैं या जिन बच्चों का अदर डिसेबिलिटी है जैसे डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी, उनके मुताबिक ऑटिज्म के पेरेंट्स में स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हाई पाए गए हैं. नाउ ये क्यों हाई हैं, किस रीज़न से हाई हैं, इसके ऊपर और आगे रिसर्च किया गया. उन्होंने देखा कि जो पेरेंट्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो पेरेंट्स हैं, दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एडिशनल टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी ज़्यादा है बिकॉज दे हैव टू स्पेंड एडिशनल अमाउंट ऑफ finances to undergo therapies for these children. Divorce rate amongst parents भी काफ़ी हाई पाया गया है और ओवरऑल फैमिली वेल बीइंग जो है वो काफ़ी इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ द डायग्नोसिस. सो अब ये होता है कि पेरेंट्स और फैमिली जो है वो एक है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अ फैमिली एनवायरनमेंट. अगर घर में पेरेंटल डिस्कॉर्ड है या माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो उसका भी बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है. अगर बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से डायग्नोज हुआ है तो आप थेरेपीज कर रहे हैं पर घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या घर के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस है, फैमिली डिस्टर्बेंसेस है, तो डिस्पाइट इंटरवेंशन बच्चे का वो आउटकम नहीं आ पाएगा. उसके अलावा अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है, बहुत कंड्यूसिव है, तो जो बच्चा इंटरवेंशंस ले रहा है उसका आउटकम, उसका इंटरवेंशंस का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होगा और उसके कारण फैमिली डायनामिक्स और अच्छे हो जाएंगे बिकॉज द होल स्ट्रेस ऑफ द चाइल्ड बीइंग नॉट एबल टू एक्सप्रेस, कम्युनिकेट और सोशलाइज इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जो भी उनके चैलेंजेस होते हैं अपने फैमिली के साथ में, वो चैलेंजेस रिड्यूस हो जाते हैं. सो बच्चे का रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है इंटरवेंशन के बाद एंड जो फैमिली के अंदर एक डायनामिक सिचुएशन होती है वो और बेटर हो जाती है लुकिंग एट द इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड.
सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि फैमिली डायनामिक्स कैसा है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बच्चे के ऊपर बहुत असर करता है वंस दे गेट अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म। अगर डायनामिक्स खराब है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी इंटरवेंशन कर लें, उनका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आएगा अगर घर के अंदर होम एनवायरनमेंट एंड फैमिली डायनामिक्स आर डिस्टर्ब्ड। अब बहुत बार जो है ये इतने सारे चैलेंजेस क्यों पाए जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों के अंदर, क्यों पेरेंट्स इतना स्ट्रेस्ड फील करते हैं, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। बहुत बार डिसरप्टिव बिहेवियर्स, चैलेंजिंग बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं इन चिल्ड्रन ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मोर देन इन अदर न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस। सो दूसरे न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन के मुताबिक बिहेवियरल चैलेंजेस, डिसरप्टिव बिहेवियर जैसे हिटिंग, बाइटिंग, थ्रोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस तरह के बिहेवियर ऑटिज्म के बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण पेरेंटल या केयर गिवर का अटेंशन ज्यादा चाहिए होता है, उनका टाइम ज्यादा लगता है, उनका लर्निंग, उनका एजुकेशन ज्यादा चाहिए, सो दैट दे कैन हैंडल दो सिचुएशन, और उनके लिए पेरेंट्स के लिए चैलेंजेस इंक्रीज हो जाता है। कुछ-कुछ बिहेवियर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे स्क्रीमिंग हो गया, अग्रेसिव बिहेवियर, बाइटिंग, वायलेंट बिहेवियर्स हो गया, समटाइम्स इन टीनेजर्स सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, या कभी-कभी बहुत मेल्टडाउन्स भी होते हैं। सो इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं, उनके कारण पेरेंटल एंजाइटी, पेरेंटल स्ट्रेस ऑब्जर्व किया गया है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बिहेवियरल डिफिकल्टीज के कारण ज़्यादा चैलेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, सोशल और कम्युनिकेशन गैप्स के कारण चैलेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, and but there is a certain set of parents जो रिसर्च पब्लिकेशंस हुए हैं उसके अंदर ये भी रिपोर्ट करते हैं that despite all odds they have felt that they themselves have grown emotionally, spiritually, they have become strong, they have become calm, they have improved on their own personalities। so बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म लेके चल रहे हैं, दे आर डूइंग सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वेरी वेल। सो लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव रिपोर्टेड दैट उनकी अपनी जर्नी जो है, देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैज ह्यूजली हैपेंड बिकॉज they are trying to manage their child who's on autism spectrum। so I think ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, जहां हम इतने सारे नेगेटिव डिसहार्टनिंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं या चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात की है, एंड दे हैव सेड दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी, जो कि हमारी इम्प्रूव हुई है वाइल मैनेजिंग आवर चिल्ड्रन ऑन ऑटिज्म। बहुत बार लिटरेचर में ये भी लिखा गया है कि जिन बच्चों के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में कॉग्निटिव डिफिकल्टीज ज़्यादा होती हैं या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, उनके अंदर कंसर्न्स एंड चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, और उनके पेरेंट्स के अंदर जो है वो स्ट्रेस लेवल्स हायर होते हैं। ऑल्दो जो भी बिहेवियर्स हैं वो उनके बिहेवियर्स जैसे स्क्रीमिंग, एग्रेसिव बिहेवियर्स, वो इवन कॉग्निटिवली जो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का एवरेज जोन में आता है उनके अंदर भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट अगर बच्चा इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव फंक्शंस वाइज एज better है or is good, then that child cannot have behaviors, even that child can have behaviors। so these challenging behaviors are one of the most important factor which leads to increase stress amongst parents who are or caregivers who are trying to manage children on autism। कभी कभी सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स होते हैं। सो ऑटिज्म की सिम्टम सिवियरिटी जो है वो वेरी कर सकती है, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, बेस्ड ऑन देयर सिम्टम सिवियरिटीज, द हेल्थ ऑफ द फैमिली मेंबर्स, द इमोशनल हेल्थ और द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द फैमिली मेंबर्स वो वेरी कर सकता है। अगर बच्चा माइल्ड चैलेंजेस है, लर्न कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली द फैमिलियल स्ट्रेस, द पेरेंटल स्ट्रेस, मैटरनल स्ट्रेस इज लेसर।
कुछ स्टडीज हैं जिनमें वो बोलते हैं कि स्ट्रेस मदर्स के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है एज कंपेयर टू फादर, बट अ लॉट ऑफ स्टडीज से दैट द स्ट्रेस लेवल्स इन पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर इज ऑफ इक्वल level. So, in these situations, it's very important for us to also know कि क्या कुछ रिसर्च है ऐसा जो हमें ये बताए कि जो रेट्रोस्पेक्टिवली जाके देखे कि क्या पेरेंट्स के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक डिफिकल्टीज हैं विच आल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड. सो इस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस होता है जिसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को कंपाइल करके दे पुट टुगेदर एंड then they find out from that compilation of research as to what is coming out. तो उन्होंने देखा एक ऑटिज्म नामक जर्नल में बहुत ही एक बड़ा मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ है जिसके अंदर उन्होंने देखा कि जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है 28 स्टडीज उन्होंने देखी जिसके अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स था जो वो काफी ज्यादा कॉमन पाया गया था इन पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एज कंपेयर टू द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन इन जनरल पॉपुलेशन. सो जो जनरल पॉपुलेशन में डिप्रेशन का डिप्रेसिव डिसऑर्डर का परसेंटेज था वो सिर्फ 4% था, बल्कि इन parents of children on autism it was heading towards 30%, 30-31%. So काफी ज्यादा इंक्रीज पाया गया था. दूसरा उसी मेटा एनालिसिस में उन्होंने एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी इवैल्यूएट किए जिसमें दे फाउंड 17 स्टडीज. सो दो 17 स्टडीज में दे फाइंड दैट 33% हायर प्रेवलेंस है of anxiety in parents of children on autism as compared to global prevalence which of anxiety in general population which was about 3.6% according to the WHO standards. ऐसे ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के की भी उन्होंने स्टडीज देखी जिसमें उन्होंने पाया कि 10% हायर इंसिडेंस है एज कंपेयर टू 1.9 to 2% इन जनरल पॉपुलेशन. सो काफी सारे ऐसे रिसर्च मेटा एनालिसिस में से निकल के आया है जिसके अंदर जो पेरेंट्स के अंदर न्यूरोसाइकियाट्रिक डिफिकल्टीज है उसका प्रमाण भी ज्यादा पाया गया है इन दीज चिल्ड्रन ऑन ऑटिज्म. So now it's important for us to understand that how, as parent, we can be what we can do for ourselves, because it's not just that the child is on spectrum. So the child will improve if the parent's health is in good state, if the parent is being taken care of. Autism is not about managing the child alone. It's about having the whole family unit being managed along with autism, because we know that autism spectrum is impacting not just the child but it is impacting the whole family dynamics. So पूरे family का health, psychological health बहुत important है for us to know, for us to understand, and for us to learn how we as parents or we as professionals can help parents to manage their own psychological status, their own stressors, and to be able to cope with those stress factors. So first is that always be alert on how you are feeling emotionally. Are you feeling too stressed up, burned out feeling हो रही है क्या, या palpitations तो नहीं होती, एंजाइटी तो नहीं रहती है. एंजाइटी के फीचर्स होते हैं जिसमें रेस्टलेस होना, नींद नहीं आना, भूख ठीक से नहीं लगना. डिप्रेशन के भी फीचर्स होते हैं कि खाना नहीं खाने का मन करना, वेट लॉस हो जाना, भूख नहीं लग रही है, एंजाइटी के कारण palpitations हो रहे हैं, घबराहट महसूस हो रही है बहुत ऑफन. So parents should also look for these symptoms in their own self, because their health, their mental health, their family dynamics is extremely important when we are managing a child on autism. So ये सभी पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनका हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ, उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस, उनकी गुड हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ is extremely important to be able to manage a child on autism in the best possible way. So management will start from managing the parents as well.
So, first, the parents should be aware of how they are feeling emotionally. Are they able to accept the diagnosis? Are they having any questions, queries about the diagnosis? Then they must reach out to the doctor, to the concerned doctor, get their queries cleared. But because it's the more they educate themselves, it's very important for the parents to get educated about the diagnosis, to be able to understand what is really happening, how is the diagnosis being made, what are the criteria being followed, what are the long term outcomes, will it have a long term impact or not. ये सब जितना पेरेंट्स आप जानकारी लेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, उतना आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि then you would be emotionally, mentally prepared as to what is the journey going to be like, what that you will also know good stories about the children showing a lot of improvement. बहुत सारे हमारे पास अ, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जिनकी जर्नी बहुत सक्सेसफुल रही है डिस्पाइट बीइंग ऑन ऑटिज्म, एंड दे हैव डन वेरी वेल. सो दोस लिसनिंग टू टॉकिंग टू दोस पेरेंट्स, जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम. So when parents of children on autism, they form a support system for each other, when they talk to each other, एक दूसरे से बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो वो अकेले महसूस नहीं करते हैं. सो इट्स ऑल राइट इफ यू वांट टू टॉक टू अदर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड their challenges and to be able to cope up with your own. वो अकेला नहीं महसूस करते हैं, then they would know that there are so many more people who are trying to handle this situation, and we can also do it. So this kind of a support system for parents is very very important. So आप अपना एक दूसरे का फैमिलीज का नेटवर्क बना सकते हैं. Back 2 years back, we had a group of children on autism spectrum जिनके parents ने दोस्ती कर ली एक दूसरे के साथ. There were 5 families and they used to have party, they used to get together, and they used to have play dates for their children arranged at somebody's house or the other. So they themselves were also having a good time, de-stressing themselves, partying around with, making new friends, and at the same time they all were accepting of each other's child. They all were understanding of the challenges that their child may come across. They all had the capacity to manage those challenges, and their children were also learning to interact at the same time. So that was a very wonderful support system. At one stage, if the parents build for themselves, something like that can be very very helpful. That can be very very encouraging for parents. Another important thing that the parents must look after is make time for yourself and your relationship. As parents, as husband wife, you must sneak out time for each other, you must spend time with each other, because it's important that you give time to your own relationship also. Marital discord, divorce, increasing number of divorces as a result of child getting diagnosed on autism spectrum. Not only does it increase the challenge for the child is, as it is not able to understand, on top of that uh, of disrupted family dynamics will further reduce the uh, outcomes and will further impact the health of the child. On the contrary, if the family dynamics is good, the husband and wife are able to give time to their own relationship, that will also somewhere help in building their own capacity, their emotional strength for each other, standing by each other, trying to figure out what are the challenges that each one of them is facing, and taking time for their own self is important, because then only they can stay mentally healthy, mentally fit, because they're doing something for themselves. We must, as parents, understand that autism is not a disease. It is a condition where the child is going to learn differently, and it is not going to go away. It is not going to disappear suddenly. The child is continuing to learn differently throughout his or her life. And for that, as parent, you cannot completely put your own life on a standstill mode.
So your life is also going on simultaneously. So you need to work on yourself. You need to take out that little time for your own self also, while share with your husband, with your family members, build a family support system, include the seniors in the family, so that you can get adequate support from other members of the family, extended members of the family, and you are able to then manage all those little outings, going to friends, going to activity places, enjoying your own life, will help you to stay mentally healthy and be able to cope up with the challenges of a child on autism, or will be able to teach your child, manage your child more happily in a as any other parent would take care of, or any other parent would parent. So that will tremendously help you in reducing the challenge. The last and most important factor is get help. Seek help. If you or your partner is persistently feeling depressed, overwhelmed, or is feeling anxious, stressed, burned out, that your child is having some kind of a challenge which you're finding it difficult to manage, speak to your doctors, seek for support, seek for guidance, and also, if need be, yourself get counseled, get your own red flags addressed, work on each other, and you can also seek help from qualified counselors, psychologists. You can have a couple or a family therapist who can work on the relationship that parents have with each other, because we know that all these factors, the family dynamics, the environment of the family, and the mental health of the whole family will directly or indirectly impact the outcome of the child on autism, and it will also impact how well our interventions are working, and how well we are getting the results out of our interventions. So this today's session was specifically for our parents to peep inside their own selves and knock at their own mental health and ask themselves, am I stressed? Am I feeling anxious? Am I feeling depressed? Am I feeling low? Am I losing my appetite? Or am I not sleeping at night because of the anxiety as to how my child is going to do, or how my child is going to cope up? So, all these things, if you are experiencing, then you must reach out for help from one of the mental health experts. It can be a psychologist, it can be your developmental pediatrician, it can be your pediatrician, and those people will help you, will support you to work on your own health, mental health as well. Again, reiterating the fact that parents का mental health, parents का psychological status मैनेज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों को सिखाना चाहते हैं, इंटरवेंशन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं या टीच करना चाहते हैं। बिकॉज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में सिर्फ बच्चा इम्पैक्टेड नहीं है, पूरा परिवार, फैमिली यूनिट इम्पैक्टेड है। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द होल यूनिट is managed, not just the child. So आप सब पेरेंट्स जो बहुत बहादुर हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए, अपना ख्याल भी रखिए। आपको अपना ख्याल भी रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी कोई आप कंसर्न नोटिस करते हैं, आपको उस कंसर्न को एड्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल। हम सब जानते हैं, रिसर्च बहुत सारी पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों के जो माता पिता हैं या पेरेंट्स हैं, उनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओसीडी जैसे दिक्कतें फार मोर हैं देन व्हाट इज सीन इन जनरल पॉपुलेशन। सो अगर उनको भी साथ में कोई ऐसे रेड फ्लैग्स, अलार्मिंग साइंस लगते हैं, so they can get themselves also treated simultaneously, because then they will be in the capacity to address their own child, to be able to help their own child in a better way.
आज का ये टॉपिक स्पेशली पेरेंट्स के लिए था, उनके मेंटल हेल्थ के लिए था और एक ऑटिज्म फैमिली के लिए था। Uh, with this, I'll end my discussion and I'll take up some of the questions which are there in comment box. Um, okay, so Neetu Kumari is asking, ma'am, where is your offline classes? Okay, so Neetu, offline classes ke liye you have to visit our centers and you can attend to those offline sessions and classes. Meenakshi here is asking, ma'am, my child is now 3 years and has started three or sometimes two phrase word. I'm doing therapy at home from 18 months, but now he has tactile probably and visual sensory. Sometimes he grinds his teeth. So, Minakshi, it's a very good achievement that your child is now 3 years and can speak 2 to 3 word phrases, is able to communicate. And I think you are doing a wonderful job by taking out time working on your child. And I'm sure you're taking good care of your own self, your own mental health, as well as today we have spoken. एंड जो सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हैं बच्चे के अंदर, आप उनके लिए या फिर टीथ ग्राइंड करते हैं, टीथ ग्राइंड करने के बहुत सारे मेडिकल कॉजेज भी होते हैं। सो हियर जैसे कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, एनीमिया हो सकता है, वर्म्स हो सकते हैं, बिहेवियरल हो सकता है टीथ ग्राइंडिंग। सो वो किस कारण से टीथ ग्राइंड कर रहा है, एक बार उनका एक जनरल हेल्थ चेकअप होना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इफ इट्स बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी देन दोस डेफिशिएंसीज कैन बी ट्रीटेड। अगर वो किसी अम, इस बिहेवियरल प्रॉब्लम के कारण है तो उनको बिहेवियरल इंटरवेंशंस एडवाइस करेंगे, या अगर वर्म्स सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर वर्म्स का मेडिकेशन देना होगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट फाइंड आउट कि वो किस कारण से वो सेंसरी कंसर्न्स आ रहे हैं, क्या उसका कोई मेडिकल कॉज है, सेंसरी कॉज है, कि वो सिंपली बिहेवियरल है। ये डिटरमाइन करने के बाद हम उनका राइट तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। सो सुजीत कुमार इज आस्किंग, बच्चों को कुछ भी राइम्स या बात करो तो बच्चा अपने हाथ से सिर पर मारता है या सिर को जमीन पर मारता है, ये सेंसरी इशू है या बिहेवियरल इशू, क्या कर सकते हैं मैडम इसके लिए? ओके सुजीत कुमार जी, अगर आप राइम्स चलाते हैं और बच्चा अपने हाथ से सर को मार रहा है या सर को जमीन पे मार रहा है, तो probably that the sound or the pitch or the level of loudness of the sound, जो उसकी जो आवाज है उससे वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण वो and it is disturbing the child sensorily, because of which the child is not able to bear it, and that's why वो सर बैंग कर रहा है या सर पटक रहा है अपना हाथ से। दूसरा ये है इशू कि अगर ये किसी और सिचुएशन में भी होता है, हेड बैंगिंग या सर पटकना या हाथ से सर को मारना, तो ये बिहेवियरल हो सकता है। आप देखिए कि ये किस किस सिचुएशन में होता है। अगर सिर्फ म्यूजिक से होता है तो आपको एनवायरमेंट धीरे धीरे बच्चे को डिसेंसिटाइज करना होगा उस साउंड्स के लिए, ताकि वो सेंसरीली इतना डिस्टर्ब नहीं हो। आप हमारा डिसेंसिटाइजेशन पे टू साउंड का वीडियो है यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि आप एक पर्टिकुलर साउंड जिससे बच्चा डिस्टर्ब होता है उससे बच्चे को डिसेंसिटाइज कैसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि म्यूजिक उसको कहीं मिले ही नहीं, क्योंकि जब भी वो म्यूजिक को एक्सपोज होंगे वो सर पटकेंगे। सो आपको डिसेंसिटाइज करना सीखना है। दूसरा, अगर वो दूसरे साउंड के अलावा भी किसी कारण से सर पटकता है तो आपको हर वो कारण एज एंटेसिडेंट टू द बिहेवियर, बिहेवियर के पहले होने वाले कारणों को मेंशन करना पड़ेगा, और आप जब वो सर पटकता है तो क्या करते हैं उसको रोकने के लिए और क्या कॉन्सिक्वेंस होता है सर पटकने के बाद, वो नोट करना पड़ेगा। फिर हम आपको बिहेवियरल टेक्निक सिखाएंगे कि आप ए और सी, ए बी सी करना होता है, ए और सी कैसे मैनेज करेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कम हो जाए, राइट। आई होप सुजीत दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। Vandana is asking, hi doctor, is there any test diagnosis
before pregnancy, so that second baby में autism का chance ना हो, first baby is having mild autism. So, Vandana, if first child is on autism spectrum disorder, then the chances of the second child being born with autism is about 15%. Again, it depends if the child is a boy or a girl. The percentage of the second child being born with autism is less if it is a girl child, and if it is a boy, then the chance is around 15%. Now, there are some genetic tests which can be done in the current child who's on spectrum, and those tests can be then, if those tests detect some kind of a genetic defect, then it can be repeated uh, on the amniotic fluid, or it can be repeated on the fluid from second conception, that is in first trimester में आप वो टेस्ट सेकेंड बेबी में भी कर सकते हैं. अगर वही डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो आप सेम जेनेटिक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कॉज. बट अगर आपने जेनेटिक सारे जेनेटिक पैनल करा लिया ऑटिज्म का इन योर child on autism, current child on autism, and you don't find out anything, then also there is no guarantee that the second child will not get it. But 85% success rate is there. Again, if the first child में कुछ genetic defect आता है, second में आपने टेस्ट कराया, सेम टेस्ट कराया, कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं आया, तो परसेंटेज चांस रिड्यूस हो जाएगा, पर नल नहीं कर सकते, हम जीरो डाउन नहीं कर सकते कि देयर इज नो रिस्क. the risk there is some risk can still be there. So it's very difficult to genetically also rule out, but thinking that 85% से 90% बच्चे हैं जो absolutely normal development हो सकती है. So you can do the test, reduce the chances, uh, detect and reduce the chances. If your present child does not have any genetic correlation, then as a family unit you can take a informed risk, I would say. And if you need more information on this, you can meet a geneticist also. There are a lot of genetic specialists available in today's time who can very precisely also tell you what test, how much is the cost, and what is the percentage that it will find out the risk in the second child. But it is very difficult to 100% rule out the risk in the second child, despite doing all the genetic testing. So we have to make an informed choice in that case. So Dr. Monica is asking, aggressive behavior and socialization की problem कैसे solve करें? Aggressive behaviors के लिए, Dr. Monica, the first thing is you have to find out when and what are the reasons, what are the timings, what are the antecedent factors again when your child is turning aggressive. कौन से ऐसे events होते हैं जब बच्चा aggressive होता है, and then आप उस aggressive behavior के बाद consequence क्या करते हैं, and then A और C को हमको modify करना है to reduce aggressive behaviors. Sometimes aggressive behaviors could simply be because of lack of communication, and the child is not able to communicate. You are not able to understand what child is trying to tell, and the child ends up becoming aggressive. So then building on communication skills will really help. About socialization है जो कि कैसे प्रॉब्लम कम की जाए, उसके लिए एक्सपोज योर चाइल्ड टू वेरियस सोशल सिनेरियोज, प्ले डेट्स रखिए, सब फैमिली मेंबर्स से बात कराइए, जहां आप पार्टी में जाते हैं उनको लेके जाइए, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम अक्रॉस कीजिए, अपने हम उम्र बच्चों के साथ पार्क में खेलने के लिए ले जाइए. जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बच्चे का सोशल टॉलरेंस इंक्रीज हो जाएगा. आसपास लोग हैं, आसपास बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग तरीके के साउंड्स आ रहे हैं, बच्चा इन सब चीजों को टॉलरेट करना शुरू करेगा एंड विल बिकम कंफर्टेबल. दैट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, एंड देन ग्रेजुअली यू बिल्ड ओवर इट. Right? So Neetu Kumari is asking, ma'am, he has problem of throwing things. I try so much, but I cannot understand him. Okay, Neetu, when he's throwing things, then you can try to distract, divert him, and make that throw more meaningful. Like if he likes to throw things, give him a ball.
and turn it into a play for the child. The moment you turn it into a purposeful activity, the child will start enjoying a purposeful activity and will learn to make and to convert that activity into a purposeful task instead of just throwing everything. uh, yeah, so Amit Mishra is asking, sometimes telling truth to relatives and neighbor create more difficulties because they look at kid in different ways and also getting less inclusive opportunities. You're right, Amit. With our current society and situation where there is lack of awareness, and telling or declaring the diagnosis can become really challenging. But I think it depends on us. The more we talk about it, the more people know about it, and the more people will start considering it as normal phenomenon, and the more people will start accepting it. They don't accept when they think, oh, it's something wrong, oh, it's rare. But if we talk so much, अब हम इतना अगर बात करके हल्ला करेंगे सब लोग मिलकर, तो ये चीज किसी को abnormal नहीं लगेगी, and it will be accepted well. Everybody will know it's all right to be on spectrum, and it is all right, they have different needs. Everybody will understand those different needs. Everybody will become more accepting, and then the society will be inclusive. So we have to start doing that exercise of first declaring it, it's all right, I have no problem with my child, I am perfectly fine with my child, and I will take my child everywhere. Let the others not socialize, you take your child everywhere. That's important. So don't restrain yourself from taking your child in different situation because of this factor. People will accept once we start talking about it more often, right? So Pooja Ben Patel is asking, hi ma'am, my son is 3 years now. He's saying some of the rhymes and words, but he's more interested in numbers and saying numbers more often. So is it normal or do we need to worry about it? So Pooja Ben, it's important to understand that कोई भी activity repetitive इतने एक्सटेंट तक नहीं होना चाहिए कि बच्चा नए नए चीजें नहीं सीख पा रहा है. ठीक है. सो कुछ रेपिटेटिव होने का टेंडेंसी रहता है बच्चे का ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, बिकॉज दैट्स रियली एंजॉयबल. और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो एक बार नंबर सीखेंगे तो दे विल होल डे कीप ऑन रिपीटिंग नंबर्स, एंड दैट टर्न्स इनटू अ रेपिटेटिव एक्टिविटी. और किसी भी रेपिटेटिव एक्टिविटी जब जरूरत से ज्यादा होगी तो उनका ध्यान कोई नई चीज सीखने में जाएगा नहीं. सो आपने उनको रेपिटेटिव टू द एक्सटेंड ऑफ ऑब्सेसिव बिहेवियर तक नहीं जाने देना है. उनको नई चीजों को भी एक्सपोज करिए, उनकी लर्निंग एक्सपैंड करिए, एक्सपोज द चाइल्ड टू अ लॉट ऑफ मोर वर्ड्स. तो फिर वो कभी कभी रिपीट करेंगे, उसका वो एक रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं बनना चाहिए. अदरवाइज इट्स फाइन फॉर द चाइल्ड टू लर्न. जब वो नया नया सीख रहे होते हैं कोई शब्द या कोई नया वर्ड या नया लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो कुछ समय तक रिपीट कर सकते हैं. आप बोलेंगे आपके पीछे रिपीट करेंगे या रैंडमली भी रिपीट करेंगे. बट अगर बहुत ऑब्सेसिव हो रहा है तो आपको चेंज करना है फिर. Okay. Shazia Wahid is asking how to manage meltdown or depressed behavior. So first thing is, Shazia, it's important that if it is a depressed behavior, we must know what is the severity, because anything beyond mild depression, like moderate or severe features of depressions, have to be managed medically. You cannot stick to managing them by just doing counseling or behavior modification. You have to treat them with medication and simultaneously add behavior modification and counseling for the child. About meltdowns, it's again important that we find out the reason, when, what triggers the meltdown, what are the factors which trigger meltdown in the child. Is it communication delay? Is it a temper tantrum? It begins with a temper tantrum and lands into a meltdown, or it is some kind of a pain. Is there a medical cause to it? So everything is around the child. We need to investigate, we need to find out every single cause which can trigger that meltdown. So every episode of meltdown, you record what was happening before the meltdown started, so that you can figure out a common factor which is leading to meltdown and then manage it.
कभी कभी मेल्टडाउन होता है बिकॉज हम कॉन्सिक्वेंस ऐसा होता है कि जैसे ही मेल्टडाउन में गया बच्चा, हमने हक करना शुरू कर दिया, जो उसको चाहिए वो उसको दे दिया। तो बच्चे को पता है कि अरे मुझे अभी अ, रोना शुरू करना है, एंड जब मैं मिल जाएगा। और कभी कभी दे स्टार्ट विद टेम्पर टैंट्रम एंड देन दे कीप ऑन क्राइंग एट द टेम्पर टैंट्रम लैंड्स अप इनटू अ मेल्टडाउन वेयर दे डोंट देमसेल्व्स नो व्हाई दे आर क्राइंग, बट दे आर क्राइंग। सो उसको हम मेल्टडाउन कहते हैं, जहाँ बच्चे को खुद को नहीं समझ होती कि मैं किस लिए रो रहा हूँ या मैं किस लिए इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, राइट। सो बहुत बार वो टेम्पर टैंट्रम से स्टार्ट होता है। सो जैसे ही स्टार्ट होता है उसको वहीं अवॉइड करो, वहीं उसको स्टॉप करोगे तो वो मेल्टडाउन में नहीं जाएगा। Again, Sujit is asking, ma'am, if 85% chance of non-autistic child in second pregnancy, why there is more fear in parents? We tend towards negative side 15% rather than positive side 85%. Please guide us. You're absolutely right, Sujit. If you go ahead with a positive mindset, और अगर आप चाहें तो जेनेटिक स्पेशलिस्ट से भी मिल सकते हैं। अपने माइंड की संतुष्टि कर लीजिए, जेनेटिक टेस्ट करना है वो कर लीजिए, पर अगर आप पॉजिटिव होकर चलते हैं with a very good and a positive frame of mind, you can definitely go ahead for the second pregnancy. There are a lot of parents who have gone ahead, but again it has to be an informed choice amongst the family members, among it's a family का choice. So उस हिसाब से आप husband, wife, other family members, everybody should sit together and then take a call as to what they want to do, because then they have to be ready for both the sides. And yes, the positive outcome is far more. You're right there. Neetu Kumari is asking, ma'am, I want to join your classes. So, okay. So, Neetu, you can drop us an email at info@continue kids. I think that will definitely, we'll try to respond to that. Your request of joining the offline classes and training. Um, we'll take up this last question from Mr. Sujit, who says, my nephew is suffering from MLD disease, and recently my child detected autism. Is my brother's son nephew related to son's autism? Are MLD and autism related to uh, MLD? Is it leukodystrophy? I would want to understand what MLD is for you, because MLD is a short form and there can be a lot of full forms to that. Autism can have be hereditary. If it is MLDs, leukodystrophies, those can also be hereditary. So I think we will. We don't have more questions for today. We have already answered most of the questions, and with this, we'll close our session for today. Thank you everyone for joining in, asking questions, and actively participating in our live sessions. And if you have more queries, you can reach out to us. Our numbers, website details, our contact details are all displayed in the video. For our online consultations, also, you can download Continue Our Kids app. You can log into our website any which ways which is convenient for you. You can reach out to us for help and support. Thank you so much, and good night.